हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टोरी हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वॉकिंग थ्रू द desert. During some points of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who gets slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand. Today, my best friend slapped me in the face. They kept on walking until they found on an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drying. But the friend saved him after he recovered from the near drying. He wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now you write on the stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it." Moral: don't value the thing you have in your life, but value who you have in your life. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।